looking for, especially in the manufacturing sector. We see those agreements being signed for deeper and closer partnership between both the countries. We next have the exchange of following 3 documents: the Indo-German Roadmap on Higher Education, the MOU for the development of National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat, and the MOU between All India Institute of Ayurveda and Charité University from Germany. These 3 documents will be exchanged by His Excellency Dr. Philip Ackermann, Ambassador of Germany to India, and Sri Ajit Vinayak Gupte, Ambassador of India to Germany. The final set of 3 documents to be exchanged include the MOU between Petroleum and Natural Gas Regulatory Board and the German Technical and Scientific Association for Gas and Water Industries, the Joint Declaration of Intent on Global Skill Partnership, and the Joint Declaration of Intent to establish an Indo-German Center of Excellence for Skilling in the Renewable Energy Sector. These documents will again be exchanged by our respective ambassadors. Well, it is considered to be an important relationship that is in fact going to emerge for Germany as well, as it tries to find more partners in Asia, moving out of its EU and NATO zone. This is also being considered as one of the most looked forward visit of the German Chancellor, and Frederick Merz has been looking at offtake agreement for green ammonia between Indian company AM Green and the German company Uniper Global Commodities on green ammonia, and the letter of intent between the Department of Posts, Ministry of Communications, documents and being the signed, Post. Especially on clean energy front as well. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Frederick Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellency, my friend Chancellor Frederick Merz, जयंती के दिन चांसलर मर्ज का भारत में स्वागत करना मेरे लिए विशेष प्रसन्नता का विषय है। ये एक सुखद संयोग है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ही भारत और जर्मनी के बीच दर्शन, ज्ञान और आत्मा का सेतु बनाया था। आज चांसलर मर्ज की यह यात्रा उसी सेतु को नई ऊर्जा, नया विश्वास और नया विस्तार प्रदान कर रही है। चांसलर के रूप में यह उनकी भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली यात्रा है। यह इस बात का सशक्त प्रमाण है कि वे भारत के साथ संबंधों को कितना गहरा महत्व देते हैं। उनके पर्सनल अटेंशन और कमिटमेंट के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत जर्मनी के साथ अपनी मित्रता और साझेदारी और सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुजरात में
हम कहते हैं आवकारो मीठो आपजे रे, यानी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करना। इसी भावना के साथ हम चांसलर मर्ज का भारत में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फ्रेंड्स, चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। भारत और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच करीबी सहयोग पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते व्यापार और निवेश संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है। ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। आज सुबह भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी सहयोग प्रति वर्ष मजबूत हुआ है और आज इसका प्रभाव ग्राउंड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान है। इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा। हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारे सहयोग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी
जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। इससे खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। आज हमने खेलों के क्षेत्र में भी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। यह युवाओं को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बनेगा। आज हायर एजुकेशन पर बना कॉम्प्रिहेंसिव रोडमैप शिक्षा के क्षेत्र में हमारी साझेदारी को नई दिशा देगा। मैं जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए आमंत्रण देता हूं। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट की घोषणा के लिए मैं चांसलर मर्ज का आभार व्यक्त करता हूं। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच नजदीकियां और बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि गुजरात के लोथल में बनाए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से जर्मन मैरीटाइम म्यूजियम जुड़ रहा है। यह दोनों देशों की मैरीटाइम हिस्ट्री को जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम है। ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का जर्मनी के साथ करीबी सहयोग रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज किए जा रहे एमओयू से हमारा सहयोग को और अधिक बल मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते रहे हैं। हमारी दोस्ती का प्रभाव ग्लोबल स्टेज पर भी दिखाई देता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे देशों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट से हमारी ट्राइलेटरल विकास साझेदारी दुनिया के लिए एक सफल मॉडल है। हम ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए अपने साझा प्रयासों को आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है। इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं एक बार फिर आपका भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा भारत जर्मनी साझेदारी को नई ऊर्जा और स्पष्ट दिशा देगी। आपकी यात्रा, आपके व्यक्तिगत जुड़ाव और भारत के प्रति आपकी गहरी मित्रता के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दांके शोन। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Frederick Merz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, to give his remarks to the media. Exzellenz, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Narendra Modi, meine Damen und Herren, die erste Reise in diesem Jahr führt mich in der Tat nach Indien. Es ist auch zugleich die erste Reise nach Südostasien, die ich als Bundeskanzler unternehme. Und ich will damit ein Zeichen setzen für die strategische Partnerschaft mit Indien. Diese strategische
Partnerschaft mit Indien hat für Deutschland, hat auch für mich eine hohe Priorität. Sie haben es bereits gesagt, 75 Jahre diplomatische Years of diplomatic relations. We share 75 years, and 75 years after establishing diplomatic relations, this holds true more than ever before. Our two countries are seeking to intensify and deepen our cooperation. This morning I had the opportunity to visit the birthplace of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is ascribed the following sentence, be the change which you hope for the world. We want to take heed of that together, dear Narendra Modi. We want to elevate the relations between India and Germany to an even higher and a new level. You invited me to visit your home state of Gujarat, and I would like to express my gratitude and express my heartfelt gratitude for this special gesture. It's a sign for the very deep ties between our two countries, but it's also a testament to the friendship towards me. Thank you very much. This city we're visiting today, Ahmedabad, in a certain way, is the cradle of modern India. This is where Gandhi started his nonviolent struggle and fight for freedom, self-determination, and democracy. And the region, this part of India, Gujarat, represents an impressive economic dynamic. A dynamic of India ranging from textile industry via highly modern smart industrial parks and to a very lively startup scene. Furthermore, the region is a pulsating location for universities, for engineering, and for applied sciences. Here in Gujarat, it becomes tangible what's important to both of us when it comes to this visit. The fundamental political values that we share, the tremendous economic potential that we see, and our ever closer interconnections with a view to skilled labor and education. And especially amid the profound geopolitical changes and upheavals in the world, we share a fundamental interest in deepening our strategic partnership. Europe and transatlantic relations remain important to us. Today, we need to forge a broader network of partnerships, and we need to do so swiftly and with a long breath at the same time. India is a desired partner, a partner of choice for Germany, and the preconditions for a renewed and deepened and intensified partnership couldn't be more favorable. Germany, as the most populous state and the state in the European Union, which is the most economically strong state in the European Union, and India is the biggest democracy of the world, we share fundamental values. The highly dynamic India and the highly technological Germany, we share essential interests, and this is what we build upon. Ladies and gentlemen, I want to focus on three priorities. First, we advocate for an international order in which we can live freely and securely. Because the world order is changing. The moment we are meeting here, it is increasingly marked by great power politics and thinking in spheres of influence. Rough winds are blowing, and we have to brace ourselves against these rough winds. Russia's war of aggression against Ukraine is probably the most drastic expression of these changes and this upheaval. Together, we are going to assert
these values and interests that we share in this new world together. No, we don't always agree in all matters, and that holds true for our European partners as well, but the overlaps we're seeing are very big indeed. And this is why we want to cooperate more closely in the field of security policy. We host joint exercises of our Navy and our Air Force, and we have joint port visits, military joint visits, and we have forms of consultations. And we want to deepen our defense industries and the cooperation of our defense industries, and this has strategic significance. That strengthens both, and that leads to the fact that India is less dependent on Russia. You saw it. We signed groundbreaking memoranda of declaration. One memorandum stipulates the closer cooperation of our defense industries in the field of development and production, and the promotion of innovation and strengthening global supply chains. But not only do we intensify our defense industrial cooperation, but we also intensify our economic relations. Ladies and gentlemen, unfortunately, we're seeing a renaissance of protectionism. It's directed against the principles of free trade and open markets. And countries like India and Germany have been focusing on the principles of free trade and open markets, and we continue to focus on these principles in future. We're experiencing that great powers, big powers, use supply chains and raw materials increasingly as instruments of power. Together, we want to oppose this. We reduce unilateral dependencies of our supply chains, and that makes both of our economies more resilient. India, as the fastest growing economy of the G20, is a pivotal partner in the Indo-Pacific. You mentioned it, Prime Minister, more than 2,000 German companies are active in India, and ever more Indian companies are investing in Germany, with a bilateral trade volume to the tune of almost $50 billion in goods and services at a record high. Germany is India's most important partner in the European Union. German and Indian companies are moving closer together in future technologies. And this is why we agreed to deepen cooperation in pivotal areas such as critical minerals, AI, digitalization and telecommunications, hydrogen, and battery storage. We want to deepen and intensify cooperation. In fact, we have with us Ambassador Bhaswati Mukherjee, former Indian diplomat, who joins with us. Ambassador Bhaswati Mukherjee, how do you see the closer relationship that we are seeing right now between India and Germany? How is there been a transformation within the old countries of EU, where they've decided that they have to move away from a NATO kind of a rubric, a NATO EU kind of a rubric, and they have to look at countries that are emerging in the world forum, where they'll have to go for a closer relationship, not dictated by the US? I was just trying to mentally compare the relationship we had with Germany when I was Joint Secretary Europe in the year 2000 to 2004, and then looking at the optics now. It's a completely transformed relationship. In 2000, we decided to have a strategic partnership with Germany, and the whole concept of annual meetings between Prime Minister and the German Chancellor, once in Germany, once in India. Now, if you look at the optics, it's been elevated to such a high level. The amount of trade that we do, $50 billion, is so impressive compared to what it used to be in the year 2000. And the kind of issues on which we have established cooperation are of vital interest to both countries. And in our case, strategic minerals are concerned, semiconductors, defense cooperation, etc. Are issues which we can use dependency on one particular country
the European donors, and on the other hand, it will help us to resist pressure from another big country that is trying to push us towards more control. Right. We will, Ambassador, get back to you once that audio line is in fact cleared. Robin Sachdev, Foreign Affairs expert and President the Imagine India Institute, also joins us. Robin Sachdev, how do you see the closer German cooperation that India is now looking at? Germany also looking at India as a key partner, not only about manufacturing, also looking at the possibility of having its factories, its industries also shifting towards another second manufacturing base from which the supply chain could be given as an alternative to China. Thank you very much. With your permission, I'll have a slight personal anecdote and then come to what is happening today. I mean, my father went on a German government scholarship in 1959 to study optics, and he was with the DRDO. So what I am today is actually somewhere beneficiary of that entire scheme. So Germany has held a very interesting space in my heart. Aside from that, I think what we are seeing today and what I am arguing, and I think that Germany should adopt a fourth pole strategy, i.e. Germany so far generally was either looking at America and working with America on the one side, on the other side it's China, okay, different aspects, economics and geopolitics, and then Russia. So these were the three poles within which Germany was, triangulating. I think the time has come for Germany and the European Union to now articulate and look at a fourth pole strategy wherein India is the fourth pole in their calculus. With respect to America, we are all seeing that how America is not only unpredictable and not reliable for Europe, but some of its steps are actually hurtful for Europe in multiple ways. Its economy, the tariffs on Europe which are there, and geopolitically. So that's the issue with America. With China, its ideology, its geopolitics, and wanting to move away from China. Russia is a complex spot of its own. So I think it's very much justified that Germany should articulate a fourth pole strategy. And by the way, the EU-India summit is happening in a couple of weeks, I think. Okay, the EU itself should come out with a paradigm or an approach that it looks at India as a fourth pole. Right. Engagement. Robin Sachdeva there getting us that perspective on the all-important India-Germany relationship, a joint declaration on defense cooperation among others as the German Chancellor meets India's Prime Minister Narendra Modi. Hello and welcome. You are watching Global Lens. I am Krishna Kumar. US President Donald Trump spoke to reporters aboard Air Force One on the developments in Venezuela, saying that the current cooperation with the country's leadership is progressing well, following recent major shifts in the region's political landscape. Trump also confirmed discussions with Venezuela's interim president Delcy Rodriguez, noting an agreement for up to 50 million barrels of Venezuelan oil, valued at roughly $4.2 billion to be sent to the United States of America. This announcement comes shortly after Trump signed an executive order declaring a national emergency to protect Venezuelan oil revenues held in U.S. Treasury accounts from legal seizure or attachment. The move aims to advance U.S. foreign policy and national security objectives while securing control over oil sales and revenues. The executive order prohibits judicial claims against these funds, which are